अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल चैनल हमारा टेक। तो आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ग्रो कोकम्बर एट होम। कोकम्बर को आप घर पे कैसे उगा सकते हैं। टू ग्रो कोकम्बर, अच्छा मैंने आपको पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह बताए हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स का, बहुत सारे फ्रूट्स का आप उसको घर पे किस तरह से उगा सकते हैं, किस तरह के टेम्परेचर में वो उगते हैं, किस तरह से उनके लिए उनको मतलब उनकी जरखेज़ी के लिए क्या चीज़ आप यूज़ करें, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या यूज़ करें, उसके लिए जो है सॉइल किस तरह से तैयार करें, किस तरह की सॉइल में उगाएं, किस तरह के टेम्परेचर में रखें, किस तरह के मौसम में किस तरह के टेम्परेचर में ये उगते हैं, इनको कितनी ज़्यादा जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है। सारा सब कुछ मैंने आपको बताया। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कोकम्बर के बारे में डिटेल से बताऊंगी। टू ग्रो कोकम्बर एट होम, स्टार्ट बाय चूजिंग a sunny location with well drained soil and ample space for the plant to grow. Plant cucumber seeds directly in the ground or start them indoor, ensuring the soil is warm and moist. Regular watering, fertilization, and support for winning varieties are critical for a successful harvest. Direct seedling, plant 4 to 6 seeds in 1 inch deep and 12 to 18 inch apart and 4 feet apart in rows. Starting indoors, sow seed input with peat-free seed compost, keeping them warm 70% and moist until seedling appear. Putting for a containers, gardening, choose smaller bushes, varieties, soil and location. Sunlight, cucumbers need at least 6 hours of sunlight daily. Soil, ensure well drained soil with good fertility. The soil with compost or other organic matter. pH, aim for a pH between 6.0 and 6.8. Planting, direct seeding, plant seed when the soil temperature is 65% indoor. Once seedling have their first true leaves, transplant them outdoors after the last frost. Spacing, space plants 36 to 6 inches apart or 12 inches apart if realizing. Watering consistency, moisture, cucumber need a alum water especially during fruit development. Watering technique, water deeply and infrequently, allow the soil to dry out, slide between watering. Avoid overwatering. Overwatering can lead to root fertilizing. Fertilization, regular feeding, apply a balanced fertilizers every few weeks to keep plants healthy and promote fruit production. Avoid over fertilization. Too much fertilizers can lead to excessive leaf growth and reduce fruit production. Support winning varieties. Trials provide support for winning varieties to encourage upward growth and keep fruit off the ground. Mulching, moisture retention, apply a layer of mulch, straw, shaded leaves, etc. around the plant to help retain moisture and suppress pest control. Mulch can help protect fruit from pests like slugs and beetles. Harvesting, at the right stage. Harvest cucumbers when they are young and trimmed before they become bitter or yellowish.
frequency averaged frequently to encourage content protection, diseases and pet control prevention measures. Maintain healthy soil, provide good drain and remove wet to help prevent diseases and pets problem. Pest control, if pests or diseases are an issue, consult with your local extension office for appropriate solution. तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद हमारे साथ है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।